So we are live and we'll start. Good evening, everyone. So according to Karl Marx, this world is divided into two classes, bourgeoisies and proletariat. One who makes the production, and second who works as a laborer. One who is rich, another that is poor. Whereas when we talk about India, we have yet an interesting case. We have three classes, the upper class, the lower class, and the most interesting, the middle class. All the three classes have difference, and that difference encapsulates in whether it be the culture, tradition, economic, prospects, future, and whatnot. But ladies and gentlemen, the vanishing point of the jurisprudence of these classes in India comes at an aspiration of one coveted job, a job which is aspired by the member of all the classes, a job that is not willing to consider your class, caste, religion, background, gender. All you need is a potential, determination, and perseverance. Yes, ladies and gentlemen, you got it right. We are talking about the Indian Civil Services, a paper one of its kind, which every year more than 12 lakh aspirants fill out the form. More than 5 lakh aspirants appear for the examination. Yet, we have only around 800 students getting selected as Indian civil servant, out of which we only have around 400 aspirants who get into the top coveted job, whether it be IAS, IPS, IRS, IFS, and etc. Ladies and gentlemen, today it gives me utmost pleasure to tell everyone that today we have with us Mr. Mohibullah Ansari, an IPS officer. But before we go into the depth of the discussion and introduction of our chief guest, there are some important aspects that we need to take into account. Before I go ahead, I humbly request and I give a sincere warning to all of the participants that please make sure that your camera and mic are off. You can have your cameras open, but please make sure your mic is off. That's an interruption. Otherwise, we have to get you out of the meeting. But with that being said, let's move ahead. That I believe all of us have in our life once thought that we have to appear for this examination, that only a handful of us are able to go ahead. All we miss out is the right guidance and right motivation. And therefore today, I, Sudeep Krishna, co-convener of Izhar, the Debating Society, Faculty of Law, Jamia Millia Islamia, hereby announce that the Debating Society is going to encapsulate a successive chapters on discussion about deciphering and unraveling the complexities of UPSC CSE with its inaugural session being organized today. Ladies and gentlemen, now let's talk about something interesting. When we thought of introducing a UPSC seminar under the ambit of Debating Society, our learned colleagues talked to us and they had a discussion that why Debating Society is willing to have a discussion on things like UPSC. Is it even under the jurisdiction of the Debating Society? And the answer to this question, which I'll give with utmost respect, is that when the Debating Society engages itself in debate, we do not debate to win an argument for next 4 minutes. We do not debate to win a cash prize. We do not debate to lift a trophy. We debate to tell everybody that the conscious of ourself has not turned ignorant towards the call of humanity. We debate to tell everybody that we are having sensitivity to the matters that are pertaining to international politics, to national development, and to the local level and grassroots levels. When we debate to usher in awareness, logic, intellect, wisdom, and above all, the truth. And therefore, ladies and gentlemen, that's exactly what UPSC wishes to have its aspirant with. All you need is to have a vigilant mind who is comprehensive about the changes and understanding of the global politics, national importance, and matters pertaining to the local lives of the citizens of the country. And therefore, who else than the Debating Society could be the flag bearer of this great initiative? With that being said, I've also come to the last aspect, that we understand that knowledge and intelligence and thought has no language. And with that being said, we also understand that our prime audience comes from all backgrounds. And therefore, Izhar, the Debating Society, has decided
at this time we will have our discussions in a multilingual languages. That means हम लोग की बातों की सारी languages अलग होंगी. We can have a mixture of Hindi and English to make sure that हमारी बातों का impact ज़्यादा हो rather than उसकी language character. So with that being said, without much ado, I like to invite our convener, Mr. Raghib Naushad, the man behind this great idea, to introduce our chief guest to the learned participants. Thank you so much. First of all, a very warm good evening to all of you. A very warm good morning to all the participants here and to the most important personality of this event. He is Mr. Mohibullah Ansari. I would rather say IPS Mohibullah Ansari because now he cleared UPSC Civil Services Examination in the year 2020 and he secured All India rank 389 there and now he is with us. So it's really a matter of great pleasure for us that sir came and sir gave his precious time to us. And now sir will interact with the students of Faculty of Law Jamia Millia Islamia. Sir hails from Siwan, which is a district in Bihar. And after that, sir did his schooling from Don Bosco Academy, which is situated in Patna. And then, like every Bihari student, he opted engineering. And sir did his BTech from IIT Delhi. And then sir started his preparation. And in his 5th attempt, now sir is an IPS officer. तो जो ये UPSC culture का जो सवाल है, to develop a UPSC culture in the university, in the faculty. When I was in my 2nd year of the college, तो जो मैंने feel किया उस वक्त कि there was lack of guidance. We were in college, लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है आगे. पढ़ तो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक गाइडेंस जो प्रॉपर होनी चाहिए थी, तो दैट वाज लैकिंग एट दैट टाइम. और हमारे फैकल्टी के सामने में ही रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी इज देयर व्हिच प्रोड्यूसेस डजन्स ऑफ IAS एंड IPS एवरी ईयर. एंड फॉर्चुनेटली IPS मोहिबुल्लाह अंसारी सर इज वन अमंग देम. तो सर को बुलाने का जो मेरा आइडिया था, वो इसलिए भी मैंने सोचा कि सर को बुलाया जाए क्योंकि सर की जो जर्नी रही है वो बहुत ही खास और बहुत ही डिफरेंट रही है. सर क्लियर्ड हिज एग्जामिनेशन ऑफ UPSC CSE इन हिज 5th अटेम्प्ट. अब 5th अटेम्प्ट में क्लियर करने से पहले उनकी 5 सालों की मेहनत, उसके बाद ही इज एट दिस पोजीशन नाउ. सर ने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो सर रीच टू द इंटरव्यू राउंड ऑफ UPSC एंड ही फेल्ड एट दैट स्टेज. उसके बाद when he appeared in the 2nd preliminary examination, so he wrote mains at that time, but unfortunately sir didn't clear the mains examination. फिर 3rd examination sir फिर से appear होते हैं and at that time sir didn't even clear the prelims examination. फिर again 4th year sir was not able to clear prelims again. तो ये सब चीजें देख के उसके बाद 5th अटेम्प्ट में आकर के सर इज नाउ एन IPS. तो मुझे वो मिर्जा अजीम बेग का वो शेर याद आता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले. तो बिल्कुल ये शेर जो है वो बिल्कुल सर पर सटीक बैठता है. और हाँ, मैं बात कर रहा था UPSC कल्चर इन द फैकल्टी इन द यूनिवर्सिटी. तो देयर वाज लैक ऑफ गाइडेंस. तो मैं कभी सोचता था कि यार व्हाई देयर इज नो एनी एकेडमिक एनवायरनमेंट इन द कॉलेज, बिकॉज जब कहीं पर एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, अच्छे लोग होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीजों को देख करके वैसे ही बन जाते हैं आगे. व्हाई देयर इज गुड एनवायरनमेंट ऑफ UPSC CSE इन IIT बॉम्बे एंड इन IIT दिल्ली. क्या वहां पर कोई बच्चा पैदा होकर के सीधे वहां पर जाकर के IAS नहीं बन जाता है? बिकॉज सर इज also an alumnus of IIT Delhi and even All India rank 1 Shubham Kumar 2020, he is also an IIT alumnus. He is from IIT Bombay. तो IITians सिर्फ पहुंच जाते हैं, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे.
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। मैंने इस पे सोचा, तो मैंने जो फील किया फैकल्टी में और यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया में रहने के बाद, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वी आर नॉट एबल टू क्रिएट, तो उसका क्रिएट होना बहुत जरूरी है। चूंकि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में भी टीचर्स कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनाता है, वहां पे दे टीच इंजीनियरिंग टू देम। वो बनते हैं वो खुद से मेहनत करके, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके। तो एक शेर, एक कविता जो मुझे मैं कोट यहाँ पर करना चाहूंगा, दुष्यंत कुमार जी की कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो ये इनिशिएटिव है टू क्रिएट अ यूपीएससी कल्चर इन द यूनिवर्सिटी, मैंने इस पे बहुत आगे तक का सोचा है। और उसका एक महज एक शुरुआत है जो कि फॉर्चुनेटली मोहिबुल्ला सर के साथ जो है उसकी शुरुआत हम लोग अभी करने वाले हैं। और सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन वन अटेम्प्ट सर एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन एंड सर वाज रेडी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। सर ने कहा कि हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिले और हमारे सिखा देने से कुछ लोग आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो है, इस पे हमने सर को इनवाइट किया है। तो नाउ इट्स टाइम कि अब आप सर का मौका है, अब सर आप शुरू करें आगे। Good evening, everyone. Am I audible? Yeah, you're audible. Raghib? Thank you, Raghib, and the Izhar community for inviting me to this place. There is a very interesting incident which happened how I met Raghib. So I and my roommate, he is also a alumni of Jamia, and he was my roommate in Jamia RCA. So he told me we were having tea at Ukla Head, and Raghib, I met Raghib there. So Raghib told me we were discussing about something, and then we exchanged our phone numbers. And there was we exchanged our phone numbers, and when I was leaving, then Raghib said कि आप क्या करते हो? Then I told him कि hello, is it audible? Yes, sir, you are very hello. much. Yeah. Then I told him कि एक बार Google search कर लेना. And then he searched my name, and then he found. The thing is, why I told you this story? I told you this story because I want to tell you what UPSC gives you. It gives you recognition. It gives you acceptance in the society. So even everybody will be able to recognize you. So when I told him, he searched for my name and he came back and he told me कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो हम और अच्छे से बात कर सकते थे. So this was the incident which happened. So it was the recognition, is the social acceptance, is the proud feeling which you get in yourself, and your family get to accept you also. That who are you? And before that you were there only, you are a son or a daughter of them. But after that you become, please switch off your mics. Please switch off your mics. Okay. So why are we here now? Okay, this was the story which I want to tell you. Why are we here? We are here to make a good contact with people who have already qualified. This is the first thing which Raghib came and told me we want to do something like that. And even a friend of mine earlier discussed this with me. But only discussing something and bringing something into action is a different thing. And the energy which Raghib has about doing something is marvelous. Like I loved his energy. I really liked his energy. So he came and told me, let's do this. And I told you I'll do this. In the first incident, even I told him I'm very much ready to go for it. So this is the first of its kind, and this will continue. Inshallah, this will continue in future, and we'll see what are the positive outcomes of it. So we hope that this becomes bring the of IITs to this. So there was a very important question: how and why IITs are able to produce IAS and IPS and other civil servants
Jamia and other colleges are not able to bring such good results? Why? What is the reason? And if you see, the social sciences and humanities are being taught in these institutes, but in IITs, most of the people are BTech and they're engineers. So there's no relation between UPSC syllabus and engineers. So why that is happening? I will tell you. The reason is, and then one more institute in which place in Mumbai, which is also engineering institute, and it is producing almost 10 to 15 civil servants every year. The reason behind this is the confidence level which they have. The confidence level that even if I'll fail at this place, I'll have something at my back. So their plan B, even if they are not getting ready for it, it is already ready for it. Even my friend used to tell me, leave the job, we'll get you in our company. So that's the confidence which helped me out, that even if I leave in fourth or fifth attempt, I'll go and do something. I'll find something out. So this is the lack of confidence that other institutes have. Now, and one more thing, once the results start coming out from a place, why RCA is producing so many results? Why any other institute will be already producing and it will keep on producing so many results? Why that is happening? Because there is a culture that gets developed. Culture of being successful. Culture of failure. Why said culture of failure? Because if you are living in a place and if you fail for 5 times, you'll believe you'll not be able to do something in your life. But when you'll come to RCA, you'll see people who have failed for 5 attempts, even they're qualifying in the 6th attempt. So you understand that, okay, they have qualified in 6th attempt, even I can do that. So the energy from the failure which you get, that you'll not get at any place. There was a senior last year, he qualified IAS in 7th attempt. And I was in my 5th attempt. So I thought that if he can qualify in 7th attempt, I can surely qualify in 5th attempt. And I'll tell you about my journey now. So I am a graduate from chemical engineering from IIT Delhi, from 11 to 15. So there was a 5 year of struggle. It was, I would say that it was not a failure. I would say every time you try to fail bigger. So my journey was a bit upside down because what happens, people don't qualify in prelims, then they don't qualify in main, they don't qualify in interview. Then they qualify interview. This is the common journey which you'll find out. But my journey was very much reverse of it. It was, I qualified in reached till interview. I then failed at mains, and then I failed at interview, prelims. So my journey was in a regressive manner, And at that one point of time, I even decided to leave this preparation and go back. But I told you, I saw in front of me people failing for 5 attempts and then qualifying. And this is what RCA has given me. I hope that even Jamia is able to get that culture in themselves. That culture of failing and accepting that failure and then becoming successful. Culture of successful is very easy to cultivate because everybody knows that if you are successful, everybody will be ready to do that. But culture of failing, that even after failing, you are becoming successful. So my optional was sociology. So at the end of the lecture, we'll have a question answer session, and then we can discuss about any questions which you have. This was my 5th attempt. I was there for training for like 2 to 3 days. I went there. I must tell you that, and when I first day went for training, I felt like I'll cry. Why I'll cry? The aura which I got, the environment which I got there, it felt like nobody can give me that. Even I went for corporate job bhi maine kiya hai. And trust me, I never got that feeling which I got there. So when I qualified this exam, I just, there was an incident what happened. I was standing in the corridor and my friend shouted, the result aa gaya hai. I told him, ja, tu result dekh le. I'll not be able to look at it. He went, he came back and he told me, ab to police wala hai. So the moment which I'll never forget in my life. Because वो moment ऐसा लगा कि you have raised above every failure, every success, and you are very much satisfied with your life. Whatever I have done, I have gained it. So, and the recognition which my family gets, not about yourself only, the social recognition which your family also gets, that is also incomparable, So even before IPS, I was a municipal executive officer in Bihar. So अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम क्यों करना चाहिए, यूपीएससी का एग्जाम क्यों करना चाहिए. Many people who are here to know कि एग्जाम क्या है, but I'll tell you एग्जाम क्यों है और एग्जाम आपको क्यों करना चाहिए. See, this exam gives you an opportunity जहाँ पे आप ग्राउंड पे रहकर you can bring drastic impact in the society. एग्जाम्पल अगर आप पढ़ेंगे, कुछ IAS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उस जगह को बदल दिया है. Even if you're an IPS officer, people even in Bihar there are 2 to 3 police officers जिनके बारे में लोग नाम से आज भी जानते हैं when they have retired.
even 20 years ago, they know कि they are the people who have changed of Bihar, law and order situation of Bihar. आप चीजें सब सिचुएशन में आएंगे तो you know about it कि लोगों ने कैसे जगह को बदल दिया है. So you have the opportunity कि आपको जो है मौका मिलेगा उस लेवल पे काम करने का जिस लेवल पे आप you can't even think about it. Even there was a last time a video was shared by one of the IPS officers who said that there was a very lady of almost 90 years of age who came to him for some issue of a document was missing, and what he did it बहुत छोटा सा काम था, and he completed her work in few minutes. Okay, like he had the capacity to do the work few minutes. He did it, and he went to his car and told कि इस औरत को घर पे छोड़ के आओ. And then he wrote a caption कि no, nothing can give you this much satisfaction which I did today. Even a small work can give you so much satisfaction. कि आप बड़े बड़े काम करके भी और पैसे कमा के भी शायद वो चीज अचीव ना कर पाओ, which he was able to do that. कि आपके सामने आप इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने की. People are dying of diseases, poverty, इतनी सारी चीजें हैं, and you have the opportunity to end that, you know. And society में कुछ बड़ा करने का, like वो उसका कोई replacement नहीं है. Even money can't give me happiness that much जितना मैं एक बंदे की लाइफ चेंज करके अर्न कर सकता हूँ happiness, you know. So what do you need in yourself to qualify this exam? The first and foremost is self belief कि I'll do it. This is the thing which I told you why IITians are able to qualify, and many others are students from very good institutes are able to qualify that because they have a self confidence that we will do it because they have already qualified once one of the toughest exams in India. So you have the confidence that they then do it. So with this there comes a optimism जहाँ पे आपको ये फील होता है कि मैं कर लूंगा. लेकिन I'll tell you कि जब मेरा 4th attempt फेल हुआ, I decided to leave this preparation. मेरे से ये नहीं हो सकता. ये एग्जाम एक्चुअली बहुत टफ है और ये I even satisfied myself कि अरे यार कोई बात नहीं, हर कोई IAS थोड़े बनता है, IPS थोड़े बन जाता है, कोई बात नहीं, इसे छोड़ के चले जाएंगे, लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, NGO खोल लेंगे, कुछ काम करना होगा तो. So this is what I thought. Then my father told me बेटा एक attempt दे दो. Because I'll tell you कि there are people who crib कि मेरे लाइफ में ये हो गया, मेरे लाइफ में हो गया. There was a point of time जब मैं लाइफ में 2 साल डिप्रेशन में था, and then I decided कि छोड़ देता हूँ, I should leave this, and I can't qualify क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट प्रीलिम्स निकला, पहले उसके बाद 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर 2 बार प्रीलिम्स निकला, तो बीच में जब 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो I decided कि एग्जाम को छोड़ देते हैं. ये अब मेरे लायक नहीं है, या तो मैं इसके लायक नहीं या ये मेरे लायक नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से शायद ऊपर है. Then my father told me कि नहीं कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है, तुम एग्जाम को एक बार ट्राई करो लास्ट टाइम. And then I decided to come to RCA. And ऐसा नहीं है कि if you believe कि RCA नहीं जाऊंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, it's nothing like that. Trust me, 90% of the students who are qualifying this exam are staying outside the RCA. More than 90% must tell you. ठीक है, more than 90%. और तो इसलिए आप अगर बाहर भी रह रहे हैं तो develop a good surrounding for yourself, जहाँ पे you have good people around yourself, you know. So and this is the benefit, this is the advantages which RCA, which जामिया has. कि जामिया के पास ऐसे कल्चर डेवलप करने के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ेगा, 1 किलोमीटर अंदर आना है बस गेट नंबर 8 से, वहां पे RCA है, तो कल्चर पहले ही डेवलप्ड है. They can get people in RCA get in contact with the people of these students who are staying अभी listening to me. तो उनसे आप कॉन्टेक्ट बढ़ाकर आप बहुत, जैसे अभी आपसे सुन रहे हैं, तो ट्रस्ट मी मैंने कभी किसी को लाइव IPS को बोलते हुए नहीं देखा था पूरे प्रिपरेशन में, किसी को नहीं देखा. आपको नहीं, मुझे तो लगता था कि ये अलग ही प्राणी है जो एग्जाम निकाल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी मुझे जब व्हेन आई क्वालिफाइड मुझे फील हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड ट्रस्ट मी यू विल फील एट द एंड ऑफ द डे कि ये भी नॉर्मल आदमी है जो एग्जाम निकाल के गया यहाँ से. ठीक है, तो द फीलिंग दैट कि हम नॉर्मल लोग निकाल रहे हैं एग्जाम को, देयर इज अ वेरी बिग मिथ इन द सोसाइटी कि यहाँ पे जो निकालते हैं वो बहुत तेज होते हैं. एंड ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं. आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ मी जो 12th में कुछ सब्जेक्ट में, आप नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, मैं कुछ दिन पहले ही उनसे मिला, आई मेट हिम. ही फेल्ड इन 12th and he qualified UPSC. Even I failed in few subjects in 10th, but then also I qualified क्योंकि फिर मैंने को लगा कि करना चाहिए यार, बहुत ज्यादा मस्ती हो गई थोड़ी, तो then I started preparing for IIT and all, तो फिर I then qualified. So you understand that, right? कि self confidence is so much important आपको एग्जाम निकालने के लिए. The second thing is कि know yourself कि मेरी weakness क्या है, and I'll tell you मैं अपनी weakness, I'll give you example for everything, right? तो आपको रिलेट कर पाओ. My weakness was कि everybody will cry, crib कि मुझे याद नहीं होता.
लास्ट डे व्हेन आई मेट रागिब, रागिब टोल्ड मी कि सर मैं जो है एक एक बुक को 6 बार पढ़ चुका हूँ। एंड देन आई थॉट कि फिर ये लड़का करेगा, ये लड़का पढ़ रहा है चीज को तो ही कैन डू दिस। नाउ ट्रस्ट मी व्हाट हैपेंड विद मी कि लोग कहते हैं मुझे याद नहीं होता। सी द थिंग इज कि ये तो इजीएस्ट सॉल्यूशन है कि छोड़ के चले जाओ, याद नहीं हो रहा छोड़ के चले जाओ एग्जाम, और क्या मतलब इससे मैं क्या बोलूं। लेकिन वन थिंग इज कि मुझे याद करना ही है किसी भी कंडीशन में, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ सिविल सर्वेंट, यू नो। अब मुझे याद नहीं होता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग हियर ऑन दिस प्लेस, आई यूज्ड टू राइट दिस एंड आई विल मेक श्योर कि जब तक मैं इसको रट नहीं जाऊं तब तक मैं हाथ धोऊंगा नहीं, यू नो। तो मैं खाना भी नहीं खाता था कि यार अब खाना खाऊंगा हाथ धोना पड़ेगा। तो यू हैव दी नाउ यू हैव टू लाइक मेमोराइज एवरीथिंग बिफोर वॉशिंग योर हैंड, यू नो। तो खुद के ऊपर प्रेशर था कि और आप 10-12 चीजें लिखो। देयर आर सी इफ यू रीड अ बुक, इफ यू रीड अ पेज, देयर विल बी ओनली 1 or 2 पॉइंट व्हिच विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज, बाकी चीजें याद हो जाती है ना। अगर आपने पढ़ाई करी है ईमानदारी से, आपको पता आपके लॉ में, अगर आप लॉ में हो तो 10-15 चीजें हैं सीपीसीसी के सेक्शन में है तो याद हो जाएंगी। 4-5 ही ऐसी होती है जो याद यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज इट। तो दैट इज सॉल्यूशन, आप कहीं उसको लिख लें, सामने लिख के चिपकाने में ये इशू है कि बंदा सोचता है अच्छा बाद में कर लेंगे, अच्छा इसको बाद में कर लेंगे बाद में। तो इफ यू राइट इट ओवर योर हैंड, आई विल कीप द, इफ आई राइट इट ऑन पेज, आई विल कीप इट इन माय पॉकेट। ये इसको पॉकेट में आई विल ऑलवेज कीप इन फ्रंट ऑफ मी जब भी मैं खाना खाऊंगा। तो यू नो व्हाट हैपेंस इज कि आपका जब सामने रहता तो आपकी मजबूरी है उसको याद करना, तो कांट रन अवे फ्रॉम दिस, राइट। So this is the solution which I use for memorizing anything, you know. Then उसके बाद hard work, there is no excuse to hard work, you need to do it. Perseverance का चक्कर ही, अगर आप perseverance रखते हैं तो आप अगर if you are able to qualify till the end, तो आपको you will feel कि चलो it was full, my whole hard work was successful and trust me जिस दिन मेरा result आया था for 3 hours I got calls from so many people. I kept on getting calls and for every person I was saying कि I'll call you after 2 minutes क्योंकि मेरे कॉल आ रहा है। I thought कि अब रुक जाएगा ये कॉल अब, and for 3 hours there was consistent, my phone was ringing, for constantly my phone was ringing. 200-300 लोग people will call you. I don't know from where they came, but they will call you. And everybody, trust me, and one thing I like to tell you is कि you can never make everybody happy. You can never make everybody happy. अगर आपके प्रिपरेशन के फेज में if you are not able to focus on your studies because of your friend, because of your girlfriend, boyfriend, family, throw them out. Not your family, माँ बाप को नहीं, like that's nothing you can't shouldn't do. जो लोग relatives which are disturbing you कि क्या पढ़ रहा है तेरा, नहीं होगा बेटा, तेरा नहीं होगा, trust me, don't make contact with those people, stay away from those people. Cool, ठीक है। Now you can't make everyone happy, but once you'll qualify, all of them will come back to you. You'll gain everything whatever you have lost. So that's the advantage of this exam. You'll gain everything what you are losing in the journey, and then you'll gain extra something which you even don't know कि मेरे को ये deserve भी मैं करता था, you know. And किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी भी हो जाएगी, किसी की शादी जबरदस्ती हो रुक भी जाएगी। तो हर कुछ एग्जाम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, you know. So that's the reason why you should do this exam, you know. And responsibility, one thing I'd like to add कि always take responsibility of your failures, you know. If you are failing तो ये ना बोलो कि अरे यार मेरा, like you have seen 3 idiots, like there was Chatur in that, who used to use so many tactics कि सामने वाला लोग fail हो जाए. And the another person, what was his name? He always topped the exam. Amir Khan always to top the exam. Ranchhod Das. Because he was able to Ranchhod Das, yes. So he was able to understand. Rancho was able to understand कि fail मेरी अपनी responsibility पे होगा. Nobody can force me to fail, you know. So trust me, कि unless you allow somebody to hurt you, you'll never get hurt. If you don't allow anybody to hurt, you will never get hurt. The first thing is this. So if you are allowing to fail yourself, then also you will fail. Even people can come, people can go, people will use tactics so that you will fail. Say कि तू मेरे को टाइम नहीं देता है यार, this is very wrong. कैसा दोस्त है तू? All these are, मतलब you don't need to focus upon this, you know. It's fine, it's totally fine. You can't make everyone happy. Your goal should be, you should have a vision why you are here, right? कहीं लिख के चिपका दो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और बिना निकाले तो नहीं जाऊंगा, you know. ठीक है। और if you are lacking motivation, आपको कभी कुछ motivation lack कर रहा है, तो आप सोचें कि आप यहाँ क्यों आए थे, why you were here, और आपके छोड़ने से क्या आपकी लाइफ पे
फर्क पड़ेगा और आपका फर्क पड़ेगा, और मैं दूसरे की लाइफ जो चेंज करने आया था क्या उससे फर्क पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा, क्या मेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगी, ठीक है। इफ यू आर वेरी मच हैप्पी स्टेइंग आउटसाइड सिविल सर्वेंट, गो अहेड, डोंट डू दिस सर्विस। बट इफ यू रियली बिलीव कि यू रियली नीड टू डू दिस एंड आपको करके ही सेटिस्फेक्शन आएगा, प्लीज फाइट फॉर इट, बिकॉज पीपल हैव क्वालिफाइड। देखो सरकार 6 अटेम्प्ट देती है जनरल कैटेगरी को, ठीक है, बाकी को और भी देती है। तो गवर्नमेंट 6 अटेम्प्ट क्यों देती है? क्योंकि सरकार को पता है कि 6 अटेम्प्ट तक एग्जाम निकलता है। अगर सरकार को ये बात पता नहीं होती कि 6 अटेम्प्ट तक निकलता है, अगर सबको 2 अटेम्प्ट में निकालना हो, सरकार 6 अटेम्प्ट देती ही नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई यू गॉट 6 अटेम्प्ट फर्स्ट। सेकंड, try to qualify in the very first attempt, work hard, give your more than 100%, because first attempt क्यों आपको फोकस करना है? The reason is if you are able to create a good base in your first attempt now, you'll be very much comfortable in the subsequent attempts, you know। अगर first attempt में basic weak है तो आप फिर अगले attempt में struggle करते ही रहेंगे। तो अब मैंने पहले attempt में जैसे I have read लक्ष्मीकांत 6 times, you know, and other books को भी मैं 6-6, 10-10 बार पढ़ चुका था। मैं बिल्कुल ही मतलब वो हो गया था कि कहीं से पूछ लो किताब से, मैं नहीं झुकेगा वाला था अपना, कि अपन नहीं, आई विल नॉट वॉक डाउन इन फ्रंट ऑफ देम, मैं करेगा इसको मैं तोड़ेगा। तो वो ना कि लाइक देयर इज अ डायलॉग ऑफ मांझी की, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ट्रस्ट मी, इट वाज रिटन ऑन माय वॉल कि मैं जब तक तोड़ेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं। तो दिस इज व्हाट लेवल ऑफ डेडिकेशन व्हिच यू वांट। देयर आर थिंग्स आई कैन टेल यू कि आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कैसे अपनाएं, ठीक है। I'll give you a very basic brief idea of it because you can search it on net, because basic books हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा है, एंड एशियन मिडिवल की एनसीईआरटीज हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जीसी लोगे, साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स बुकलेट है, यूट्यूब वीडियो से आप देख सकते हैं। एंड एनवायरमेंट के लिए शंकर पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स के लिए रीड 1 न्यूज़पेपर and 1 magazine. If you want to start preparing for UPSC from today, start reading a newspaper. Cool, na? Because it gives you a very broad idea and it opens your mind. It opens your mind that you can think beyond what you have been thinking till now, you know. So that's how you'll force yourself to go beyond a point. Now the thing is, what is the strategy for mains? Trust me, there are many friends of mine who have already prepared for mains and उन्होंने आज तक mains देने का मौका नहीं मिला. Because the biggest struggle is to qualify prelims. 6 attempt आप देते रहते हैं और prelims ही नहीं निकलता. Because almost 10 lakh people fill the form, you know, and only 10,000 get an opportunity to qualify this prelims, you know. 10,000 out of 10 lakh, आप जोड़ लीजिए कितना है, only 1%. उसमें से भी only 700 to 800 people will qualify this exam. Cool ना? So this become very hectic. बहुत तो prelim निकालना बहुत 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 जरूरी है. तो focus on your prelim. Don't focus much on your mains till right now. अगर करना ही है तो प्रीलिम का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, देन फोकस ऑन मेंस. बहुत सारे बच्चे शुरू करते कि भाई मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगा और मेंस ही पढ़ूंगा सबसे पहले, प्रीलिम्स तो मेरे बाएं हाथ खेले. सी yesterday a girl called me, she got a number from somewhere and she told me कि प्रीलिम्स तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं प्रीलिम्स यूं ही निकाल लेती हूँ, मुझे आप मेंस का बता दीजिए. आई टोल्ड हिम चलो ठीक है आप मेंस का जान, मतलब प्रीलिम्स में आपको क्या आता है. तो शी टोल्ड मी कि पढ़ लिया मैंने बेसिक. मैंने कौन सी किताब पढ़ी आपने? ट्रस्ट मी, शी वाज नॉट इवन नोइंग द बेसिक्स ऑफ द प्रीलिम्स. And I can write you and give this to you. If you are not thorough with your basic books now, you'll not be able to qualify this exam. There are few basic books which I have already quoted for every subject, you know. तो उस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स की हर बेसिक बुक को बिल्कुल ही अच्छे से समझ के करना है, you know. There was a friend of mine who told me कि यार मेरे को ना कोई हॉबी बता दो जो मैं तैयार करूँ इंटरव्यू में यूज करूंगी. एंड उसका 5-6 अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके अटेम्प्ट खत्म हो गए, उसकी हॉबी तैयार हो चुकी थी इंटरव्यू के लिए. This is foolishness, right? How can you even do this to yourself? So fool others, like fool others. आपको दूसरों को बेवकूफ बनाना है, अपने घर वालों को बनाने कोई बात नहीं, नॉट नहीं. अपने आप को ना बनाए कि मैं, आप घर पे बोल रहे हैं कि 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना. आप बोले मैं उसमें आपकी पर्सनल लाइफ है, नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट, बट स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ कि आज मैं 10 घंटे पढ़ा, मोबाइल बैठ के देख रहे हैं और वीडियोज चल रही है, एंड देन यू आर सेइंग कि यार आज मैं 10 घंटे पढ़ा, मजा आया. This is ridiculous. आप खुद को बेवकूफ नहीं बनाए, आप सबको, आपको जिसको बेवकूफ बनाए, लेकिन not fool yourself, you know. You should be at least self analysis. That's what I told you. You should know yourself. तो कि आपको क्या करना है. यूपीएससी should be like a नशा for you, you know. लोग बहुत सस्ते नशे करते हैं, सिगरेट पीते हैं और पता नहीं क्या करते हैं. यूपीएससी अच्छा नशा है, लाइक गुड क्वालिटी नशा है. इसको आप अच्छे से करें. इसका नशा ट्रस्ट में एक बार जब चढ़ जाता है ना, फिर वो नहीं, बाकी सारे नशे आप छोड़ सकते हैं, यूपीएससी का नशा नहीं उतरता है. There are people who have wasted their 10 years of life in this exam. I've never seen any other nasha capable of wasting 10 years of anybody's life, you know. So this is the best and the most intoxicating
ग्रेटिफिकेटिंग थिंग यू कैन गेट इन योर लाइफ यूपीएससी का नशा जो है। एंड द थिंग इज कि आप जैसे कि इन्होंने कहा कि गिरते हैं शायद मैदानी जंग में, वो सिर्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दिस इज व्हाट माय फादर यूज्ड टू टेल मी एवरी टाइम एंड आई लव्ड इट। मेरे को पहले मतलब नहीं पता था, बट जब मैं 2-4 बार फेल हुआ तब मुझे फील हुआ कि अच्छा ये अपन फेल होंगे बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर इट। इफ यू आर नॉट इवन फाइटिंग फॉर इट ना, यू विल नॉट इवन फेल। तो बेस्ट पार्ट टू नॉट टू फेल इज नॉट टू ट्राई। तो आपको अगर ट्राई नहीं करो तो सबसे अच्छी बात है फेलियर की। सो इफ यू आर फेलिंग ना, फेल बिग। जैसे आप अगर आज कुछ कम मार्क्स से फेल हो रहे हैं, अगली बार कोशिश करें कि और कम मार्क्स से फेल हो और अच्छा करके फेल हो। वर्क हार्ड, लाइक गिव योर बेस्ट इनटू इट, ठीक है। और नेवर फोकस से कि मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मैं फेल हो गया एंड मेरी को किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया। ऑल दिस आर रिडिकुलस मतलब एक्सक्यूज है, ठीक है। ड्रीम बिग, ड्रीम बिग मतलब कि मैं ये पूरा ही इंटरव्यू का एक चीज विच विल टेक फ्रॉम दिस प्लेस, बिकॉज you can also get YouTube videos जहाँ पे लोग मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। I am telling you कि why this seminar is going to help you out. The biggest thing with this seminar will give you a dream to be successful, a dream to be a successful failure. You know, this is the benefit of having a live lecture where you feel कि ये बंदा जो है जब कर सकता है। Trust me, when I can qualify this exam, everybody can qualify this exam. I failed in 10th. I was a very bad student. मतलब मेरे टीचर ने मेरा नाम मोहिबुल्ला से मुसीबतुल्ला रख दिया था एक पॉइंट पे। आई वॉज कॉल्ड अ नॉन पेड क्लाउन। आई वॉज वेरी जॉली पर्सन। आई वॉज थिंक लाइफ ऐसी चलती है, मजे करते रहो। तो आई यूज्ड टू रोम अराउंड, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है 10th में तक। देन आई रियलाइज आफ्टर 10th, सी द थिंग इज कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि यार मुझे कुछ करना है। एंड द थिंग इज दैट टाइम शुडंट कम लेट इन योर लाइफ, इट शुड कम एज अर्ली एज पॉसिबल। मेरे को 11th में रियलाइज हो गया कि लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज माई फादर scolded me and even I was bitten. Like मेरे को बहुत मार पड़ी in front of many people because I was not studying in life, you know. तो मेरे को बहुत मार वाली पड़ी। तो then I thought कि ये गड़बड़ हो रहा है, सुधार को। You will also trust me, everybody sitting here will realize कि यार shit गड़बड़ हो गई, क्या करना है। That shouldn't come late. It should come as early as possible. ऐसा नहीं कि शादी हो गई अब रियलाइज हो रहा है, oh shit अब तो काम नहीं किया। Like I met a person yesterday. Whenever I go for a cab, I will talk to the cab driver. I'll make sure I'll talk to the cab driver because you always get to learn from somebody. So what I told him कि भाई आपने क्या किया? बोला सर मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, अब जिंदगी में सोच रहा हूँ कर लेना चाहिए था। See, उसने भी रियलाइज किया कि उसने गड़बड़ करा। It's not about studying, it's about working hard in your life. You'll work hard in your life. मैं एक बात बताऊं कि जितनी अर्ली लाइफ में आप जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, लेटर उतना कम स्ट्रगल करेंगे। एग्जाम्पल, if you are struggling for 11th and 12th, then you will not struggle for your whole life. उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, काम का स्ट्रगल होगा, स्ट्रेस करके मैं कमा नहीं रहा हूँ। If you will not struggle in 11th and 12th, you will struggle for your whole college life कि कुछ अच्छा कर लूँ। तो 4 साल का 2 साल का स्ट्रगल 4 साल से रिप्लेस हो गया। If you will not work hard for 2 years and then 4 years, that is 10th and 12th and college, then you will work hard in your employment sector, you know. तो वहां पे फिर 10 साल का स्ट्रगल होगा, और वहां भी नहीं करोगे तो फिर जिंदगी भर आपके बच्चे का स्ट्रगल होगा, यू नो। तो खुद के लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए पढ़ लो, यू नो। Everybody is in graduation going to get married in next 4 to 5 years. So at least study for your spouse या फिर अपने बच्चों के लिए, तो उनकी जिंदगी खराब होने वाली है, ठीक है। तो या तो कुछ अच्छा सपना देख लो कि like I'll do something in your life, do something great, do something big, fail big, be a successful failure. मैं वही बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो that's what there is concept of marks, but that is delayed gratification concept है। delayed gratification concept ये होता है कि आज आप जो है ना अपने इच्छाओं को मार लेते हो कि चलो आज घूमने नहीं जाएंगे, आज पढ़ लेते हैं। डिलेड करके में अपने ग्रेटिफिकेशन को यू डिले योरसेल्फ, राइट। ग्रेटिफिकेशन को यू डिले कि भाई मेरे को बाद में ये काम कर लेना है, यू नो। खुशी मैं बाद में ही कर लूंगा। जैसे कि आपको गर्लफ्रेंड घूमने जाना या फिर आप कुछ भी करना चाहते हो जो आपको खुशी देती है, यू विल से कि नहीं आज नहीं, आज पढ़ाई करनी है, यू नो। तो दैट्स द थिंग, डिले करो अपनी ग्रेटिफिकेशन, सो दैट योर ग्रेटिफिकेशन कुड बी स्ट्रेंथन इन टाइम, यू नो, लॉन्गर होगा। अभी इतना शॉर्ट ग्रेटिफिकेशन नहीं होगा, यू नो। तो व्हाट आई मीन टू से बाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तो अच्छी चीजों को बाद में, जैसे देते हैं मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट अबाउट मार्शमैलो? किसी को पता है? हाथ उठाने। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, तो चलो नहीं पता, आई विल टेल यू व्हाट इज मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ कि यूएस में पीपल देयर वर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को ये एक दिया गया, मार्शमैलो इज अ चॉकलेट, यूएस में चलता है, तो सबको दिया गया एंड बोला गया कि चलो ठीक है, स्टूडेंट्स कैन ईट इट व्हेनेवर दे वांट, अभी हम पढ़ाई करेंगे। तो कुछ बच्चों ने उस समय खा लिया, कुछ बच्चों ने उसको बाद में खाया, एंड इट वाज नोटेड दैट हु
the students who ate it later on, they were the most successful students of their the class, you know. So those who delay their gratification, they are prone to success. तो जब सक्सेसफुल अगर चाहिए आपको तो अपने ग्रेटिफिकेशन को यू नीड टू डिले इट, यू नो. एंड द थिंग इज कि इंसान यू आर लाइक जस्ट अ सर्वेंट और स्लेव ऑफ योर टाइम. देयर मे बी इट मे हैपन दैट आप सक्सेस ना मिले किसी पॉइंट पे, बट देयर विल बी अ टाइम यू विल बी सक्सेसफुल. सो यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि एक समय आएगा. लोग कहते हैं कि अपना समय आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा, यू नो. सो ये जो गाने बनते हैं इसको थोड़ा अच्छे सोचोगे तो बहुत अच्छे गाने भी हैं कुछ, लेकिन यू फील गुड. तो अपना टाइम आएगा. द थिंग इज कि आप स्ट्रगल करते रहोगे. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी, अगर मैंने छोड़ दिया होता फोर्थ अटेम्प्ट में तो मैं यहाँ तो नहीं बैठा हूँ. लोग मुझसे, एंड ट्रस्ट में उतनी ही मेहनत के बाद भी nobody gives you respect. The tragedy is you know, but we need to know not how to be successful. We need to know how not to be a very good bad failure, you know. And nobody gives respect to a failure. That's the issue with this whole system. So you can learn from this. Even I requested Rakib की अगली बार जब क्लास कराना तो एक बंदे से हम ऐसे बात कराएंगे जिसने 6 अटेम्प्ट निकाला है, प्रीलिम्स और फेल हुआ है फिर वो. So that even I talked to Rakib about this. So ये बात हुई थी हमारी. So this is what we want. कि you should know कि how to be a successful failure, how it feels when you are successful, how it feels when you are bad, when you are failure, how bad it feels, you know, and how much work he has put. So the thing is कि crisis produces hero. See, there may be a crisis in your life. आपके life में crisis हो सकता है. And at that, why whenever you see a good man arriving, even Gandhi ji arrived जब देश में crisis था. Even anybody, a religious leader, just think about your religious leader. When he arrived in this world, there was crisis in this world. There was darkness in this world. So whenever there is a darkness, there is an opportunity for you to rise. So whenever there is a darkness in your life, there is an opportunity for you to rise. So never see darkness as a roadblock to your success. See that as an opportunity कि अब मैं कुछ बड़ा करेगा, अब मौका मिला, अब मैं फेल हुआ ना, अब मेरे को बड़ा करना है, इधर मेरे को फेल वगैरह रहना नहीं है ना. तो if there is a crisis की जैसे आपने मूवी सुना है कि देयर वाज अ मूवी, व्हिच मूवी वाज, कौन सी मूवी थी वो, जिसमें वो लड़की लीव्स सर एंड ही बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर. वो राजकुमार राव की देयर वाज अ मूवी, शादी में जरूर आना मूवी. यस, द थिंग इज कि see there was a crisis in his life and then he qualified, and there are many stories like this. Trust me, those who have qualified, they will not tell you कि that was their story, क्योंकि फिर नाम बहुत खराब होता है. They will not tell you, but trust me, I know many of them जिनके साथ actually ये हुआ है. So there was a crisis in their life. वो चाहते तो देवदास, there was only two things, आप देवदास बन जाएंगे या फिर you will qualify, है ना, you will do something miracle. So there is an opportunity, there was a crisis, then you will become hero. There could be issue, there is financial issue हो सकता है आपके घर पे और भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, you know. फैमिली प्रेशर हो सकता है. Then lot many things that can happen. बस वहीं पे you need to think now it's my time to rise from all this. There is a story of eagle. I'll tell you. Eagle की story ये होती है कि जब वो आता है, साइक्लोन आता है, when there is a cyclone, the birds start, other birds start running away from it, but eagle waits for it, let it come, and when it comes, there is a like energy that is in the cyclone. It uses the energy to rise above it, you know. So that be an eagle. जहाँ पे you will use your issues, use your crisis, use your chaos to rise above it, you know. That's the main thing which you can do. Be an eagle. Don't be like other bird की मुसीबत देखा है and just ran away. Or don't be a शुतुरमुर्ग जो कि problem को देख के जमीन में सर डाल लेता है. Fight against it. If you're not able to recall anything now, if you're not able to memorize anything, like use it as an advantage. याद मेरे को याद नहीं होगा. I'll show this book कि मैं क्या चीज हूँ, है ना. एक self respect होनी चाहिए कि मेरे को तू याद कैसे नहीं होगा. I'll tell you who am I. मेरे को 100 नंबर नहीं आएगा प्रीलिम्स में. I'll show this exam who am I. You know, this should be your confidence level की कोई बात नहीं. लेकिन ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि आई एम अबव ऑल दोस थिंग्स, आई डोंट टेक इट. So don't do that. Like be confident, don't be over confident, you know. You need to work hard. मतलब पढ़ने का, मेरे को 10 घंटे पढ़ने का, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, अब मेरे को 10 घंटे ही पढ़ के दिखाएगा. कमर का मैं दर्द का इलाज कराएगा, मसाज कराएगा, लेकिन पढ़ेगा भी, है ना. 10 घंटे आई स्टडी, यू नो. So that should be your strength. And see, one thing is कि कभी कभी लंबी छलांग लगाने के लिए ना 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, यू नो. तो एट टाइम्स जैसे कि है ना, आपको लंबी छलांग मारने 2 कदम पीछे लेना ही पड़ेगा. एंड इवन यू कैन बी शोएब अख्तर, यू कैन बी बुमराह. शोएब अख्तर टेक्स लॉन्ग रन अप, बुमराह टेक्स शॉर्ट रन. का मतलब ये है कि इफ यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, बिफोर
that you may take 5, may take 2 years. सबका अपना समय होता है, तो अपना फेलियर का एक टाइम हो सकता है. आप उसमें लॉन्ग रनअप भी ले सकते हैं, जंप करने से, बॉल फेंकने से पहले शॉर्ट रनअप भी ले सकते हैं. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम. टाइम, इंसान जो है समय का मोहताज होता है. ऑलरेडी टोल्ड यू. तो द थिंग इज कि यू डोंट नीड टू बॉक डाउन कि यार ये गड़बड़ हो जाएगी, समय जा रहा है. हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है. इफ यू फेल, डोंट कंपेयर इट टू योरसेल्फ कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं निकाला यार, मैं क्या कमजोर स्टूडेंट? नहीं, ऐसा नहीं है. यू मे टेक टाइम बिकॉज यू आर अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. यू आर नॉट अ बैड human being. You are not a bad student. You are a different student. You take your time to cultivate that in yourself. You need to take time to sharpen yourself. And the last thing which I'd like to tell you, last year बिल्कुल खत्म है, इसके बाद we can have a conversation session. Be a good human being. You can be a good IAS officer. You can be a bad IPS officer. या good IPS officer. आप हर कुछ हो सकते हैं. But be a good human being first. ठीक है? The thing is कि why are we can in this world we can be everything. Why not to be a good human being? And that's the whole thing which you can take from this place. कि आप जो कुछ भी लाइफ में बहुत कुछ हो सकते हैं. गुड, अच्छे इंसान बनिए. सी आज लाइक रागिब आया, मुझसे बोला, कुछ नहीं जा रहा था, वो मेरे से ही बात करता चला जाता. एंड ट्रस्ट में उसको मैं और लोगों से मिलवा देता जो और भी बहुत कुछ सीख जाते हैं. बट मतलब मेरा तो सीख ही जाऊंगा. I need to help others also. So this is the reason आपका benefit, right? तो percolate this to other students also. ठीक है, आपको कोई हेल्प हुई आप आगे हेल्प करो, आपको कुछ हुआ तो आप आगे सर्कुलेट करो, राइट? नहीं तो ये this world is surviving on humanity. This will die one day if it will not be like that. So be a good human being. Try कि आज से I'll do good to others. एंड इफ इस एग्जाम में अगर आप आ रहे हो, अगर आप अच्छे इंटेंशन से नहीं आ रहे हो कि मैं तो करप्शन करेगा, मैं लोगों को परेशान करेगा, मैं अपना पावर यूज करेगा, प्लीज डोंट कम टू दिस एग्जाम. दिस इज नॉट फॉर यू. इफ यू वांट टू ब्रिंग अ गुड चेंज इन द सोसाइटी, जहां पे आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, और वो देखकर आपकी आंखों में ना चमक आती है, लोगों की खुशी देख कर ना, कम फॉर दिस एग्जाम. आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, किसी का सॉल्व कर दिया केस, किसी को हेल्प कर दी, किसी का अच्छा कुछ कर दिया, यार कितना लाइक दिस इज समथिंग गुड you can do. And now we can start the question session if you have any questions. Yes, sir. Thank you so much, sir. That was enlightening. सर, जो रीजन था कि हम लोग ने इस मीटिंग को प्लान करा, वो यही था कि एक आइडिया आए कि जो सिविल सर्वेंट जो सुपर ह्यूमंस नहीं होते, वो हमारे जैसे हमारे बीच के ही कोई हैं जिन्होंने कुछ गलतियां नहीं करी, कुछ सही स्टेप्स लिए. तो सर, जब हम लोग इस चीज को शुरुआत करेंगे, तो सर सबसे पहली बात आती है कि एक रूटीन क्या होना चाहिए. तो सर, कैन यू प्लीज टेल अस कि आपका जब आप एस्पिरेंट थे जिस दौर पे, तो आपका डेली रूटीन क्या था? आप सुबह किस समय उठते थे? आपका क्या रहता? यू वर ईदर अ मॉर्निंग बर्ड और अ नाइट आउल? No. The thing was कि what I used to do is I used to sleep for 7 hours. That is fixed. I'll sleep at 1, I'll wake up at 8. I'll sleep at 12, I'll wake up at 7. So don't reduce those number of hours. See, even once I've read that Elon Musk sleep for 7 hours, Einstein used to sleep for 10 hours. This is what I've read on internet. I'm not very much sure about it. But कुल मिला के बात ये है कि you need a good sleep. Don't compromise with that. ठीक है. Now, now the question is कि how much hours should I study? This is the question, and I personally believe that this question is why I think so. कि करना क्या है? Like, what do you want to do from other like आपको क्या करना है बाकी समय पे? You want to like 1 घंटे just keep for yourself कि मुझे आधे घंटे चाय पीऊंगा, दोस्तों से बातें करूंगा, and I'll come and study. Like you'll wake up at 7, you'll get freshen up and breakfast till 8, start studying, go till like पहले like you all are young, right? You have just graduated, बहुत एनर्जी होती है, कमर में दर्द होता है. After you go above 25, बैक में पेन होने लग जाएगा, दिमाग काम नहीं करता, and शादी का प्रेशर, घर का फलाना ढिमकाना, there are a lot many things that happen. Don't take that into consideration. What you need to do is you need to sit for studying at 8, study till lunch, take a nap if you take a nap. I used to take nap for 20 minutes to 20. अब अपनी body को I have trained in such a manner कि even I can sleep for 20 minutes without an alarm in the nap time. So I'll sleep for like 12:30, 1 बजे खाना खाऊंगा, half an hour खाना खाने में लगता है, half an hour के बाद I'll go for sleep till 2. I'll come back at 2, study till 6, I'll go for tea, have tea till 6:30, I'll study till 9, have my lunch and dinner at 9, and then I study till 11, then read a book, read any book which is out of syllabus. ठीक है, मैं ये नहीं करता था, which I'm starting doing now. Do that.
there are a lot of advantages to it. Please do that. So this is what the study are which I used to follow. खाने के समय I'll take half an hour for food, half an hour for lunch, half an hour for nap, half an hour for tea. This is it. And बाकी समय I used to study. करना क्या? Like धीरे धीरे, this is the timetable which you can follow in your first attempt. धीरे धीरे the number of hours of studying will be reducing. क्योंकि फिर you can't study, you can't focus. There are a lot many things. अब like in your age of 20, 21, 22, there's nothing more much to think about. But at the age of 27, 28, there are a lot of things which are going in your mind. lot many things. पापा यार सोच रहे हैं, बताओ बहन की शादी है, बताओ पापा कह रहे हैं कमाना है. A lot many things will come to your mind, है ना? So focus on your studies from 21, 22, 23, 24, 25. This is the like golden period of your preparation. Like put yourself into 100% of your life. Study for 10 hours at least. Study for at least 10 hours every day. This should be minimum focus. बाकी उससे ज्यादा जितना हो जाए, ठीक है? All right. तो सर इसी पे एक another follow up question that हाँ जी सर, क्वेश्चन जैसे ये है कि प्राइमरीली हम लोग लॉ डिपार्टमेंट से हैं और सर हमारा एक 5 year कोर्स होता है, तो उसमें अनूमन एक बच्चा 18-19 की उम्र में आता है, वो 23-24 की उम्र में कॉलेज को छोड़ता है. कॉलेज के दौरान सर देयर इज अ वेरी हेफ्टी सिलेबस. बिसाइड्स लास्ट ईयर में क्या होता है कि इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, आपको 6 महीने स्ट्रेट आपको कोर्स में रहना होता है. तो सर उस दौरान आप क्या एडवाइस करेंगे कि शुड वी कंप्लीट आवर कोर्स और रादर साथ साथ चलाएं या कंप्लीट करने के बाद 1 साल का ड्रॉप लेके फिर? सर एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, और दिस इज अ इंटीग्रेटेड कोर्स, so it will go for 5 years. तो प्लीज शेयर द एक्सपीरियंस. आप यू आर इन आईटी दिल्ली, तो जैसे मैं चाहता क्या हूँ कि देयर शुड बी अ गुड कल्चर ऑफ यूपीएससी इन द फैकल्टी और यूनिवर्सिटी. तो एक कल्चर जो है वो शुरू से डेवलप हो जाए. कहते हैं ना कि सोहबत का असर होता है. अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसके साथ अच्छे हैं. तो वो इन्वायरमेंट जो आपने वहां पे देखा होगा उसको यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है, अब वो बता दें, फिर तो लोग आगे बढ़ जाएंगे. There is a text right now. एक chat में text है. Just I will address that. एक बार कर देता हूँ. Then I will come to the next question. आप एक मिनट, chat में एक क्वेश्चन है कि आप बेसिक बुक बता दो और सबको ये प्रॉब्लम होती है. So let's address that. Everybody, I'll request कि एक बार अपना chat देख लें, chat box में, है ना? I'll just write something and just go through it once, है ना? ये बेसिक बुक्स हैं which you need to focus upon before this exam. ठीक है? ये दिखा आपको? Anybody has any doubt in this? तो ये पूछ लें पहले. So this is the most important thing which someone has asked, और ये सबको इशू होता है. Cool ना? सबने देख लिया क्या ये? और मैगजीन कैन बी एनी मैगजीन. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? Cool. ये there is a सर इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट? एक क्वेश्चन है. It depends कि कौन सा सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आप बोल रहे हैं. ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. एंड बिपिन चंद्रा जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, itself is a form of एनसीईआरटी, यू नो. वो एनसीईआरटी में लिखा था पहले, फिर बिपिन चंद्रा ने अपना पब्लिश कर दिया. ठीक है, तो बिपिन चंद्रा इज अ फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी. आप उसको भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की. इवन फॉर एंशिएंट मिडीवियल आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती. तो सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है. जो मैंने आपसे कहा है उसकी एनसीईआरटी ही पढ़नी है. ठीक है, जो लिखा हुआ है. The thing is, and see, if you are studying polity लक्ष्मीकांत, तो आप YouTube पे वीडियोस देख लेंगे. अगर आप you are doing without coaching, ठीक है, तो YouTube पे हर चीज का मटेरियल अवेलेबल है, यू नो. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? YouTube पे पूरा लक्ष्मीकांत किसी ने समझा रखा है. YouTube पे हम इसका पूरा मटेरियल अवेलेबल है. जैसे कि अब मैं जैसे आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको फेमस लोग पता होंगे जो YouTube पे पढ़ाते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग हैं. ठीक है, आप YouTube पे आपको सब मिल जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड ना? किसी को कोई डाउट इसमें? एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं? सबकी नहीं पढ़नी है, लेकिन आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी सारी पढ़नी है, पहला. दूसरा, जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो YouTube पे वीडियो पहले देखें, उसको समझें एंड देन पढ़ें. यू नो, देयर आर वेरी गुड टीचर्स who are uploading their content free of cost. यार, use that. Don't run after कि मैं पैसा देगा तभी पढ़ेगा. That's a very bad idea. कि मेरे को 1 लाख रुपए लगाना ही है तभी मैं पढ़ पाऊंगा. ठीक है, और जब आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो sit for 10 hours, leave your mobile aside. This is what I used to follow earlier. अब तो नहीं, I used to follow anything like that. But what I used to do, I leave my phone in my room and I'll come back.
जब मेरे को खाना खाना होगा आई कम बैक टू माय रूम, और कुछ बेसिक नंबर मैं रखता था अपने दोस्त के फोन में, तो आई कॉल फ्रॉम हिज फोन। तो ये स्ट्रेटजी उसको नहीं पता थी, वो फोन लाता था, बट मुझे ये स्ट्रेटजी पता थी। तो मैं रूम पे फोन छोड़ देता था, कम टू माय रूम, लाइब्रेरी, स्टडी फॉर जितना घंटा पढ़ना है, आई गो बैक टू रूम, वहां पे पढ़ लूंगा, या फिर लाइब्रेरी में जमा कर दो। 4 घंटे पढ़ो तो 4 घंटे अच्छे पढ़ो, है ना, वो वाली बात। एनसीईआरटी बाकी आप 10 से लेकर 12 तक पढ़िए, वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, टॉपर्स की वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड सेकंड कि आप किसी प्रोपागेंडा में ना फंसे कि पहले मेंस की तैयारी करनी है। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक तब पढ़नी है जब आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, और तब भी बेसिक बुक पढ़ने से पहले आपको यूट्यूब पे आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। बहुत सारे कोचिंग मटेरियल जो है बहुत फेमस, इकोनॉमिक्स का कोई बहुत फेमस आपको पता होगा, उसमें ज्योग्राफी का भी है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो है, तो आप उसको देख लें। ठीक है। आपने कहा था आपने राघव आज तो निकाल पूछा था कुछ नहीं सर, कल्चर कैसे कैसे सिमिलर हाँ कल्चर हाँ डेवलप करना है, राइट। हाँ, तो उसका कल्चर का चक्कर ये है कि उसका कल्चर का चक्कर ये है कि सबसे पहली चीज की कोई कल्चर ना एक दिन में डेवलप होता नहीं। द थिंग इज कि वहां पे क्या था, पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। देयर इज अ क्वेश्चन कि हम 6 से 4th ईयर में सर कैसे करें। दैट वाज अ वेरी मतलब लेट टू स्टार्ट इफ यू वांट टू क्वालिफाई जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन। So what you can do is you can start. That's why online seminar was done, not offline. क्योंकि फिर ऑनलाइन फर्स्ट ईयर के लड़के मिल नहीं पाएंगे, ओनली लास्ट ईयर के लड़के मिलेंगे, ताकि फर्स्ट ईयर वालों को ये पता लग जाए कि फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करते हैं। एंड आई नो मेनी पीपल who say that they have qualified in their first attempt after graduation. They were preparing for 4 years. वो तो नहीं बताएगा, nobody will tell you मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था, nobody will tell you that. So that's what I think कि उसकी जरूरत है, आप शुरू से तैयारी करें एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहे तो 4 साल बहुत होता है किसी चीज को समझने के लिए, ठीक है। अब एक सवाल की आपका, अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट में कर रहा हूँ तो कैसे होगा। ठीक है, अब लास्ट अटेम्प्ट में अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई उसमें इशू नहीं है। आप फिर अगर आपको बिजी है तो उसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बट एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीड दी न्यूज पेपर। 2 घंटे तो आप आपने कॉलेज से तैयारी करी है, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने और भी चीजें देखे हैं, और आई हैव बीन टू देयर फ्रेंड्स ऑफ माइन जो मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, एंड इवन फ्रॉम आईआईटी जो पीएचडी एमटेक कर रहे हैं। तो इस ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट एबल टू टेक 4 आवर्स अ डे, दिस इज द मिनिमम यू कैन टेक आउट। कुछ भी आप जॉब कर रहे हैं ना, पीपल क्वालिफाइंग व्हेन दे आर डूइंग जॉब, उससे ज्यादा तो आप बिजी नहीं, या कोई भी बिजी नहीं होगा 4th ईयर में, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन टेक आउट 4 to 5 आवर्स ऑफ फिक्स्ड, डोंट वेस्ट अ सिंगल, आपका टाइम नहीं है तो, और फिर क्लास से आए, भाग के आए, फ्रेशन अप हो, 4 घंटे मेरे को इतना से इतना पढ़ना ही है, एंड डू दैट, राइट। पहली चीज तो वो 4 घंटे में आप 1.5 से 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे फिनिश अप करें। दूसरा कि आप कोई बेसिक बुक्स को पढ़ें, बस कुछ ना पढ़ें, आप बस बेसिक बुक्स को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ये दिस इज द मिनिमम यू कैन डू, एंड आई बिलीव कि अगर आप 4th ईयर में तैयारी शुरू कर रहे हैं और टाइम भी नहीं है तो ठीक है, एक अटेम्प्ट और लग जाएगा। इट्स नथिंग कंपल्सरी कि आपको एक ही अटेम्प्ट में, इट्स वेरी गुड आइडिया कि एक अटेम्प्ट में कर रहे हैं, बट अब टाइम ही नहीं है तो लाइक इफ यू आर नहीं है टाइम तो नहीं है, लाइक देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट, तो इट्स कोई बात नहीं, लेकिन यू शुड प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर इफ इट्स पॉसिबल। नहीं तो 4th ईयर में तो आप कर ही सकते, आप जब भी स्टार्ट करें, कभी जब जाओ तब सवेरा इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन से राइट नाउ, ठीक है। तो बेसिक बुक एनसीईआरटी पढ़ते रहे। अगर आप फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, ठीक है। देयर वाज अ क्वेश्चन किसी चैट में भेजा है, हाँ, कि can coaching help now? Coaching help how? Coaching, see, can help also, can back. 99% of the students who are doing coaching and have not qualified. तो मैं ये नहीं कहता था कि coaching ही qualify कराएगा. And there are people who I know जिन्हें coaching नहीं करी उसने भी qualify करा है. So it depends upon you, brother. What I felt coaching gave me was a discipline. कि आपको discipline में क्लास जाना है, आना है, बैठना. So that's what I told you कि आप लाइब्रेरी हैं और एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, तो एज सच कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। फॉर मी का नॉलेज का नहीं था जितना उन्होंने डिसिप्लिन दिया कि मेरे को सुबह जाना है, 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है, दोबारा आई विल स्टार्ट। तो नथिंग लाइक दैट कि कोचिंग के बिना नहीं होगा, कोचिंग के बिना भी होगा, ठीक है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की इज कोचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई नो मेनी पीपल क्वालिफाइड, तो आप नेट पे यूट्यूब पे लिखे कि हाउ टू क्वालिफाई यूपीएससी विदाउट कोचिंग, बथेरे वीडियोज आ जाएं, वॉच देम, एंड ट्रस्ट में कितने सारे कोचिंग है जो फ्री मटेरियल डाल रहे हैं यार। आप नेट पे सर्च करो ना कि इकोनॉमिक्स फ्री कंटेंट वीडियोस, आप रागिब से बात करो, रागिब को एग्जैक्टली पता है
कहाँ क्या वीडियोस हैं, स्लीपी क्लासेस किसने लिखा है, आई यूज्ड टू रेफर इट फॉर सोशियोलॉजी, ठीक है। और यही कल्चर जो आप कह रहे हैं ना कि सीनियर, जैसे अब रागिब है, राइट, अब रागिब अगर मेरे पास बस आता एंड ही वाज, ये सेमिनार नहीं होता तो किसी को नहीं पता तो प्रिपरेशन कौन कर रहा है। अब सबको पता है कि मेरा सीनियर है। नाउ ऑन अ ऑफिशियल स्केल मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले सकता, यूट्यूब पे किसी वीडियो का नाम, मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता, राइट, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन व्हिच आई हैव, तो आई विल नॉट टेक दैट टाइम, कूल इनफ, राइट। बट अगर आपको ये पता है कि किसी से मैं कांटेक्ट करके, अब आप कोई ना कोई होगा जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, यू मे बी कैन आप वॉच, आगे से। अब जैसे इकोनॉमिक्स है तो यू कैन वॉच मूनाल वीडियोस जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब उसी पे ज्योग्राफी भी है, उसमें मैं IRS ऑफिसर है, मूनाल के ही उनके वेबसाइट पे 55-56 वीडियो वहां से आप कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में क्या होता है कि व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर तो कुछ समझ में नहीं आता है, वी गो ब्लैंक। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि दे पब्लिश एवरीडे एडिटोरियल का वीडियो। इसमें एग्जांपल है ओनली IES जो है, वो बहुत ही बढ़िया कंटेंट डेली एडिटोरियल का डालते हैं, तो आप वहां से उस चीज को रेफर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम इज अ फ्री कोचिंग सेंटर जहां पर यू कैन गेट एवरीथिंग, और ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ एनी कोचिंग यू कैन गेट देयर। टेलीग्राम पे गो एंड जस्ट सर्च UPSC वीडियोज, आपको विजन IAS का वीडियो मटेरियल मिल जाएगा, आपको शुभ्रा रंजन का मिल जाएगा, आपको मतलब जो मटेरियल चाहिए आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। मुरनाल वीडियोस आप करने के लिए यू विल गेट सब्सक्रिप्शन ऑफ एन अकेडमी, आप जाइए, आपको टेलीग्राम पे वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, 70-80 वीडियोस हैं उनके, आपको उनके यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा। एक मुरनाल.org वेबसाइट भी है, और वेबसाइट पे मतलब समझ लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर चाहे क्वेश्चंस आपको चाहिए हो, चाहे आपको उसके अलावा किसी जो ब्लॉग अगर पढ़ना है, किसी का एक्सपीरियंस पढ़ना है, कोई लॉ ऑप्शनल है उनके बारे में ही पढ़ना है, तो दे अपडेट ईच एंड एवरीथिंग। मतलब हर चीज जो है आपको आज इंटरनेट पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ढूंढेंगे। आप और कोई भी चीज अगर आप सर्च करें, एक चीज है जो मैंने सीखा है अभी, और मैं खैर बताने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन अब सर ने कहा है कि आप एज अ सीनियर मैं बता सकता हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट आई कैन डू कि मैं गूगल कर लूंगा इन्फ्लेशन और साथ में UPSC लिख लूंगा, इन्फ्लेशन UPSC आप गूगल कर लीजिए, आपको वहाँ पे दृष्टि IAS हो गया, आपको फॉरम IAS, मतलब जितने भी UPSC के कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं वो लोग अपना उस पर डाल देते हैं कंटेंट, तो आप उसको आसानी से रेफर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट राइट UPSC उसके आगे एंड सर्च इट, वो आप फिर वहां से उस कंटेंट को अवेल कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो अब ये आप लोग, दिस व्हाट आपने मुझसे पूछा था कि कल्चर क्या है जो डेवलप होता है, दिस इज द कल्चर हाउ इट डेवलप्स, यू नो, इट परकुलेट्स डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, ठीक है। हमारे यहाँ कॉलेज में क्या होता था, देयर वाज सेंट्रल लाइब्रेरी एंड देयर वाज अ क्लास की भाई जब भी कोई प्रिपरेशन करने आएगा सबसे पहले यहाँ के मत्था टेकेगा। देयर वाज सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ पे एक लोकेशन था जहाँ पीपल विल कम एंड सिट, सबको पता है कि UPSC तैयारी करने वाले लड़के यहाँ बैठते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वहां जाके बैठ जाना है, एंड पीपल विल टेल यू, they will check your papers, they'll tell you, those who have given 5 attempts, they know exactly, the person who has given 5 attempts knows much more than you in your first attempt, right? He'll tell you, तो उसे 5 साल की मेहनत आपको 1 साल में दे दी। अब जब आप फर्स्ट फिफ्थ थर्ड अटेम्प्ट में आओगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 7-8 साल की मेहनत है अपने थर्ड अटेम्प्ट में, यू विल गिव दैट टू फर्स्ट ईयर, तो उसके बाद 7 साल की मेहनत, यू नो, दिस इज हाउ द कल्चर डेवलप्स। So this meeting is, that's what this meeting is all about, you know. And I think धीरे धीरे कल्चर डेवलप होगा, आप लोग जगह डिसाइड कर लेंगे भाई यहीं पढ़ते हैं, सारी UPSC वाले यहीं पढ़ते हैं, यहीं बैठ, धीरे धीरे इट विल डेवलप, यू नो। एंड सेकंड देयर वाज अ क्वेश्चन की, देयर वाज अ करिश्मा का क्वेश्चन था कि ठीक है सर वर्किंग है एंड शी इज अ मदर आल्सो एंड 2 अटेम्प्ट बचे हैं, प्रेशराइज हाउ टू मैनेज सर। द थिंग इज कि if it depends how many times you have qualified prelims, but don't stick to UPSC itself. UPSC का पहला U का मतलब unpredictability है, you know, so just diversify your basket of risk. You should also take state PCS also, है ना, अदर्स एग्जाम भी दें, ऐसा नहीं कि उसको एक नहीं नहीं मैं तो बस UPSC ही है। इवन आई क्वालिफाइड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और वो भी मैंने दिया था, तो इवन व्हेन आई कैन ट्राई यू कैन ऑल्सो ट्राई। आप मतलब इफ यू बिलीव कि नहीं मैं इसके लिए ही बना हूँ, देन UPSC के नीचे तो मैं बात ही नहीं करता किसी से, तो इट्स योर विश, है ना। लेकिन आई शुड टेक कि यू शुड ऑल्सो स्टडी टेक अदर एग्जाम्स ऑल्सो, है ना, तो डाइवर्सिफाई योर बास्केट। और 2 अटेम्प्ट में अगर आपको देना है तो टेक प्रीलिम सीरियसली, बस इतना ही कहूंगा। एंड रीडिंग वन गो अगेन पॉलिटी डोंट नो कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप पेपर सॉल्व करेंगे। सर बैकअप ऑप्शन, देयर वाज द आइडिया ऑफ बैकअप ऑप्शन, पूछा कि सर प्लान बी होना चाहिए क्या? आई से प्लान बी होना चाहिए, लेकिन वो आपके बैक ऑफ द माइंड आपको हावी नहीं होना चाहिए कि प्लान बी कब प्लान ए बन जाता है पता नहीं चलता, यू नो। तो मुझे ये पता था कि मैं कभी कुछ नहीं करूंगा तो आई गो बैक टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स कंपनी जो मुझे हेल्प कर देगा। बट ये नहीं था कि मेरे को अब वही करना है, ये तो करना ही नहीं था। तो वो नहीं होना चाहिए अरे यार कितने की सैलरी मिल जाएगी, लेट्स गो वहीं चले जाते हैं। एक मेरे को ये था कि आई नेवर गो बैक, आई डोंट वांट टू गो बैक, जस्ट मेक योर माइंड कि मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा बिना निकाले। एंड देन प्लान बी हो तो ठीक है, बट आई विल से कि कोर्सेज वैसे कर लें जहां पे प्लान बी हो आपके पास, लाइक लॉन्ग रन में इट बैक फायर, यू नो। अगर प्लान बी ना हो, प्लान बी एक उसका फॉर्म में ये हो सकता है कि आप स्टेट पीसीएस को एग्जाम निकाल लें, ये भी प्लान बी है। प्लान बी जरूरी नहीं है कि आप मास्टर्स करने चले जाएं, देयर कुड बी प्लान बी कि आप स्टेट पीसीएस निकाल लें, कोई और एग्जाम निकाल लें जहां पे एक नौकरी आपकी सिक्योर हो जाए। इट हेल्प्स, इट एक्चुअली हेल्प्स, ठीक है। तो प्लान बी इस फॉर्म में बना है, प्लान बी को प्लान ए पे हावी ना होने दे, ठीक है। किसी ने लिखा कि हाउ मच टाइम वी नीड टू डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा, a lot, like you shouldn't be too much focused on, आप डेली यूट्यूब देख रहे हैं डेली, आप दिन में ये रखिए कि मैं हाफ एन आवर, जब मैंने बताया कि जब आप पे जाएंगे हाफ एन आवर लंच के वक्त, बस मैं मोबाइल देखूंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर वापस आके अपना पढ़ूंगा। तो स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल। घर पे बता दे मम्मी 8 बजे के बाद 8 से 8:30 कॉल करना, आपकी मम्मी को लगेगा क्या मेरा लड़का हीरो हो गया, टाइम पे ही बात करता है, उसके इधर जाते डिसिप्लिन लड़का है मेरा, यू नो, दे विल आल्सो फील गुड। तो डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम मोबाइल एंड सोशल मीडिया। लिमिट भी बंद ना करें, क्योंकि बिल्कुल ही बॉयकॉट करना तो इज नॉट अ गुड आइडिया है उससे, क्योंकि अब जैसे रागिब ने बताया कि टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है, तो यू कैन यूज इट फ्रॉम टेलीग्राम। सीसेट के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू, बिकॉज आई हैव नेवर स्टडीड सीसेट इन माय लाइफ, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा एडवांटेज था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो वो आप लोग खुद ही एक बार, आपको सीसेट की क्लासेस चाहिए तो मैं बात कर लूंगा, आप लोग कभी डिस्कस करके मुझे बता दें, आई विल टॉक टू समबडी हु हैज ऑलरेडी फेस्ड सीसेट इशू एंड देन क्वालिफाइड इट, तो आपको हेल्प कर देगा। law student often face dilemma whether to go for judiciary, ये तो फिर someone from law can only tell you this, you know, but judiciary could be a good backup for you, you know. UPSC, as I told you, is a very vast and unpredictable, so what you can do is कि आप judiciary की preparation, मुझे लगता है कि UPSC के बाद judiciary के लिए बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप law ही अपना ऑप्शनल रख लें तो उससे क्या होगा, judiciary भी तैयार हो जाएगी, आपकी वो भी तैयार हो जाएगी। तो डू समथिंग जो कि ओवरलैप करे। आई कांट टेल यू कि ये छोड़ दो वो करो, है ना, फिर बाद में you'll say कि यार सर ने फंसा दिया मुझे, तो वी कांट डू दैट, राइट। इट शुड बी अ पर्सनल चॉइस। एंड ये सर डिड यू ज्वाइन द बीपीएससी वाला पोस्ट, हाउ डिड यू मैनेज योर जॉब? नहीं, आई नेवर ज्वाइंड इट ब्रदर, बिकॉज हमारा रिजल्ट एग्जाम 2018 में एग्जाम हुआ था एंड उसका रिजल्ट 2021 में आया, एंड उसकी ज्वाइनिंग अब जाकर आई है जब मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो थोड़ा इशू रहता है इन एग्जाम के साथ। तो ये एक एडवांटेज भी आपको कि एग्जाम रिजल्ट लेट आ रहा है तो आप दूसरे एग्जाम के लिए यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं, तो ये एग्जाम का थोड़ा एडवांटेज भी है। संकल्प में विकल्प न रहो। अच्छा सर रामदेव, सब फ्री में अवेलेबल, ठीक है। डिड यू व्हाट इज इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स फॉर मेंस, गिव सम एडवाइस टू इम्प्रूव द वेरी बेसिक राइटिंग में वेरी, आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट when you qualify prelims. What do people what they do is they start preparing for mains and they are not ready with the prelims. Don't do that mistake, you know. What you need to do is, what you can do is, आप prelims पे एक बार तैयारी कर लें, once you are comfortable with prelims then go for mains का आंसर राइटिंग and practice आंसर राइटिंग। आप आपस में आप लोग बैठ के करें, ठीक है, आप लोग आपस में बैठ के करें, टॉपर्स की कॉपी देखें, ये कैसे लिखता था कि क्वालिफाई कर गया, इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इसका स्ट्रक्चर क्या था, वो कुछ तो अलग कर रहा है ना, क्वालिफाई कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी इजीली एबल टू फिगर आउट ये कैसे क्या। आप सोचो मैं अकेले बैठ के मैं ही स्टार्ट हूँ, आई विल फिगर इट आउट। ट्रस्ट मी, आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि इसने ऐसा क्या किया कि क्वालिफाई कर गया, मेरे साथ क्या इशू आ रहा है, बहुत इशू होता है। बट इफ विल लाइक 2 to 3 people, 3 to 3 of them will sit together and then they will try to figure out कि क्या कर रहा है ये बंदा जो क्लास में रैंक मार रहा है या टॉप कर रहा है यूपीएससी में, तब आपका दिमाग काम करेगा, अच्छा इसने ये चीजें करी हैं, वी कैन डू दिस, यू नो। So that's the difference. You can always try to study in a good group, not only group, in a good group, ठीक है, डेडिकेटेड ग्रुप। ये नहीं कि अरे यार चलना चाय पी के आते हैं, चलना ये कर, चाय पीना इज गुड बट चाय पे चर्चा इज नॉट गुड, ना, दैट्स अ बैड आइडिया कि आप वही करे जा रहे हैं, ठीक है। तो चाय पे चर्चा पे ना फोकस करें, पढ़ाई वहां भी करना तो कुछ पढ़ाई के रिलेटेड बातें करें, ठीक है, ये नहीं कि उसकी शादी हो रही है यूट्यूब पे टॉपर का भी देखा क्या, डोंट डू दैट, ठीक है, क्योंकि आजकल तो बहुत ग्लैमरस हो गया है ये चीजें, तो जस्ट अवॉइड दैट। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनली आफ्टर यू आर कंफर्टेबल विद प्रीलिम्स। इफ यू आर नॉट गुड विद प्रीलिम्स इट विल बैकफायर अपॉन यू, क्योंकि आप आंसर राइटिंग की तैयारी करते रह जाएंगे।
how can we cope with the generation preparation of other government exams along with UPSC? See, the syllabus is not very different, you know, syllabus is quite similar. और जैसे मैंने यूपीएससी बीपीएससी के लिए ज्यादा नहीं 1 महीने पढ़ा होगा, तो जब बीपीएससी एग्जाम जब हो, तो या कोई भी एग्जाम जब हो, तो यू कैन ओनली गिव अ मंथ फॉर इट एंड यू विल क्वालिफाई दैट एग्जाम अच्छे से फिल स्टडी. तो दिस अप्लाइज ओनली व्हेन योर यूपीएससी प्रिपरेशन इज गुड. इफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन इज आल्सो नॉट गुड, वो भी नहीं निकल रहा है, इवन योर स्टेट, तो दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है. मेक योर यूपीएससी प्रिपरेशन वेरी लाइक क्या बोलते हैं रोबस्ट, है ना, you will qualify that first, then you can give 1 month 2 months for your state PCS exam. ठीक है, एग्जाम से जस्ट पहले, and that will help you out surely. ठीक है. How RC will be additional to your coaching? Can I unmute your mic? Nuhi, एक बार Nuhi, हाँ Nuhi बताइए, आप कुछ बोलना है. Good evening sir. Good evening. Sir, my name is Nuhi Praveen. Sir, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि सर एज अ बिगनर हमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमारा बेसिक लेवल क्या रहना चाहिए सर. और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम सर, जैसे मैंने बहुत सारे टॉपर को सुना है तो ये बताते हैं कि मेंटल हेल्थ मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सर वो कैसे मैनेज करते हैं वो बता दीजिए. सी मेंटल हेल्थ वन की, हाँ मेंटल हेल्थ का चक्कर ये है कि पहला कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें. प्रिपरेशन मैंने बता दिया कि बेसिक बुक्स पढ़ना शुरू करें, सबसे पहला है ना. ठीक है, आप वो चीज शुरू कर सकते हैं बेसिक बुक्स को पहला. दूसरा कि न्यूज़पेपर पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करें. ठीक है, आप लाइक यू आर इन ग्रेजुएशन और यू हैव कंप्लीट ग्रेजुएशन? नो सर, अंडर ग्रेजुएशन. और अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, यू हैव सफिशिएंट इनफ टाइम, यू नो, सो यू कैन फोकस अपॉन इट. लाइक आप फोकस करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर तो आप धीरे धीरे बेसिक बुक्स पढ़ना शुरू करें. इफ यू आर इन फोर्थ ईयर तो आप ड्रॉप ले लें, और मतलब कि जस्ट के बाद आप शुरू करें. और न्यूज़पेपर पे इसलिए पढ़ना जरूरी ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, यू नो. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी व्हाट आई विल टेल यू इज कि एक सेकंड डिस्टर्बिंग थोड़ा. तो बेसिक बुक्स पे जब आपका कमांड हो जाए देन कम टू करंट अफेयर्स, नहीं तो ऐसे ना पढ़े. तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स बेसिकली. ठीक है, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग तब करें, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब प्रीलिम्स का खत्म हो जाए. एंड ऑप्शनल आप साथ साथ अपना करते रहे. जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ऑप्शनल शुड बी योर स्ट्रेंथ. ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा ऑप्शनल ले लेके एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने अपने साथ. डोंट डू दैट. लाइक इफ यू लॉ ऑप्शनल तो लॉ ले लें. ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल है तो, नहीं तो यू कैन चूज योर ऑप्शन एज अदरवाइज ऑल्सो. आरसीए, देयर वाज अ क्वेश्चन कि आप आरसीए की एडिशनल कोचिंग के अलावा क्या हेल्प किया. आरसीए हेल्प मी आउट इन वन थिंग कि मुझे ये पता चल गया कि फेल सब हो रहे हैं. Trust me, this was the biggest advantage IPS RC has given me कि I know कि everyone is failing and that's a very nice idea कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ फेल होने में. ठीक है, so this is the advantage which I got and यहाँ फिर मेरा confidence build up हुआ. And this exam is whole about confidence. Prelims, mains and interview. Prelims में आपको तुक्के मारने पड़ेंगे 50-60 क्वेश्चन में. अगर आपने prelims का पेपर देखा होगा, if you have seen, you only know 30 questions and you have to like go for tukka in almost 50-60 questions. If you don't have the confidence, you will not be able to do that, right? Even in interview, there is a game of confidence. In essay, there is a game of confidence. हर पेपर में there is a game of confidence. So you need to focus upon कि आपका confidence build up. This is where RCL. So if you are not able to come see RCL, there is a solution to it. Make a good group among yourself. Make a culture among yourself among जामिया. कि यहाँ पे अगर आपको पता चले कि अच्छा यहाँ पे सब लोग पढ़ते हैं, and there are people who are failing and even qualifying after that. The whole thing is done, you know. आपका आरसीए, आप अपना आरसीए के बाद भी बना सकते हो. एंड आई होप कि पीपल विल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट. धीरे धीरे ये डेवलप कर लेंगे. ऐसा सी वन डे में ये नहीं होने वाला. द एडवांटेजेस व्हिच यू हैव गॉट इज टू मीट एज मेनी सिलेक्टेड पीपल, टू मीट एज मेनी पीपल जो एग्जाम में फेल हुए हैं, वो तो आपको बता सकते. दिस इज द एडवांटेज फॉर जामिया. यूज दैट फॉर योर एडवांटेज. बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरे को ना आरसीए जाने नहीं मिलता. देयर आर पीपल हु विल क्रिब अबाउट एवरीथिंग कि हमें आरसीए में जाने नहीं मिलता है, बैठने नहीं मिलता है एंड इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ. That's a bad idea. Don't put blame upon yourself. ठीक है, you make RCA outside RCA, क्या दिक्कत है ना? Where people will be there और जो आपको हेल्प कर पाएंगे. ठीक है. There was no more question. Does RCA just improvement of the just the environment of preparation, generally attempted preparation, like we rely on RCA, like we can we see brother? You will say we rely on RCA. You cannot rely on anybody except yourself. Trust me on this. There was a question कि can we rely on RCA? There are people who are failing here also. हर बंदा यहाँ भी फेल हो रहा है.
So you don't need to trust upon anybody. You need to trust upon yourself. Rely upon yourself. कि मैं इस चीज को करूंगा, एंड आरसीए विल गिव अ बेटर एनवायरनमेंट, नो डाउट अबाउट इट. यू कैन नॉट, ऐसा नहीं है कि आप आरसीए आते ही आपको जन्नत मिल गई और यूपीएससी में आपका नाम चला गया कि भाई इसको सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं. यू नीड टू वर्क अपॉन योरसेल्फ. ठीक है, ये चीज है. ठीक है, तो आरसीए में आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा जहां आपको फायदा होगा. सोशियोलॉजी वाज ऑप्शनल, कूल है ना. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग. मैं धीरे धीरे, आई होप कि आगे भी कंटिन्यू हो, और जो लोग आपको मिलने की जरूरत हो तो आई टॉक टू राघव व्हाट कैन बी डन. And I hope that the culture that develops in RT. Can a JMI student not eligible for, but not get some guidance or answer check? देखो यार, even if you are an RCA ना, nobody is gonna check your copy. क्योंकि यार सबके पास इतना टाइम नहीं है. तो अगर आप दोस्त यहाँ RCA में भी आके आपको ग्रुप बनाना पड़ा जो आपकी हेल्प करते हैं. ऐसा नहीं कि आप जाके सबमिट कर दोगे. Just tell me one thing. Why will I check your copy? आप आके मुझे सबमिट कर दोगे RCA में? Because there are, I trust me, so many, I get so many calls, और अभी मेरे पास मैसेज आया मेरा कॉपी चेक कर देंगे आप. If I'll start doing that, तो फिर मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा. So what I'm trying to tell you is कि nobody is going to do that for you, right? It's just that the group which you'll make ना, that is going to help you out. That the contact is going to help you out. Not ऐसा किसी को आप क्वेश्चन भेज दोगे, किसी को आगे समाज कर दोगे. आने वाले वक्त में we will develop all those things. फैकल्टी में हम फैकल्टी को आरसीए बनाते हैं. यहाँ पे will invite all other many other IPS officers जो अगर सपोज के किसी को मेंस राइटिंग में अगर प्रैक्टिस में अगर कोई चीजें इश्यूज है तो उसके लिए हम अलग सेशन कंडक्ट करेंगे. एंड यहाँ से ये तो पहली शुरुआत है. इससे आगे धीरे-धीरे जो भी डाउट्स आ रहे हैं, अब वो एक बार में तो क्लियर हो नहीं सकता है, तो हम इसको इंशाल्लाह आगे जरूर कोशिश करेंगे ठीक करने. तो now, sir, I believe we had a lot of questions, and now we'll have next 5 minutes of fun time in which we'll have multiple questions, but you will only answer that is it a myth or a reality. So actually these were the doubts by students, so we have accumulated with us. So answer, forgive me if any question gets out of track because this is a compilation. So I'll begin with the first question, that UPSC is tough. Myth or reality? I don't doubt, but it's doable. It's not impossible. It's doable. It's doable if you work hard. All right. Next question. UPSC is luck based. Myth or reality? No, it's luck plays a role, but it's not only luck based, because work can compensate for your luck, no doubt. But it's I think luck plays a role, but only it doesn't depend on luck itself. Luck do play a role, make it. All right. Third question: you have to study 12 plus hours a day every day. You can't study 12 plus hours every day. That's not possible. You can maximum study for 10 hours. I believe this. You can study for 10 to 12 hours. You can keep your margin, but that's surely a myth. And luck wale mein, I'd like to add you one thing. If you are able to study for 10 to 12 hours, you are itself is lucky. You are lucky enough to study those hours, you know. कि आपके अंदर इतना हिम्मत है, इतना lucky है आप कि you can do that. So hard work, being a hardworking person itself is a lucky thing for you. Yes. Next question, that while you are an aspirant, you have to sacrifice your personal life. Myth or reality? It depends which kind of personal life you are in. You know, if you are in a toxic personal life, then it's going to be harmful for you. But it's just very much positive, because Tanish Kataria, sir, if you will see what he said, right? So that's not toxic. So personal life is not always bad unless it's toxic. It depends on your personal life in which you are engaged. Absolutely. Next question, a very controversial question, that once you get selected in services, politicians will exploit you. Myth or reality? Nobody can exploit you unless you're ready to get exploited. Trust me. Great reply. Next question, there is so much corruption in the department that even if you're willing to bring a change, you won't be able to bring one. That's the complete myth. Trust me. I know so many people who are honest. Absolutely. Next question is that UPSC or the CSE, it's a generalistic job. You're not working in a specific department. It's a generalistic job. You just become a jack of all trades. It's not about civil servant. It's about, this is what is said about IAS, you know. IAS is a generalistic job. Now if you are in railway, it's a specialized job, right? It's not a generalist job. So if you're in police, you are a specialist police, right? You are not a generalist police.
So this is said about IAS, not about all other civil servants. So this is a myth. All right. And sir, last myth. After that, we'll have another round. But last myth, that you have to quit social media. नहीं, you don't need to. अभी रागिब ने इतना अच्छा बात बताया कि आपको यूज करना पड़ेगा चीजें, बिना उसके नहीं हो पाएगा. यूट्यूब पे तो पूरी दुनिया है. You can't run away from YouTube now. Absolutely. अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं यार, बहुत, even if you're doing coaching, you can't run away from YouTube. YouTube is world now. All right. So the next segment is Have I Ever? You'll have 3 options: yes, no, better not say. Number 1, have done cheating in your college exams. Yeah, I have. I think everybody has done that. Without that, life is not complete. Sir is an engineer. That's not complete. Have bunked classes. Yeah, like almost every time we did that. Even my attendance was short in so many. Have went into fighting with friends. Not with fight. friends. No, not with friends. Because even if that's a fight, it's not a fight among friends. It's like, chill out. There was a incident which I like to share. So a friend of mine, I used to tease him, and he threw a lock on me. Lock, and he ran away and I closed the door. And then we started shouting, "Okay, abhi hum ladenge, abhi tu bachega nahi." And then the whole chaos happened, and then it was sorted out. Now we are one of the best friends. So I closed him from outside. All right, very well. Last question from this segment, that you have not studied for an entire week during your UPSC preparation. कभी ऐसा कोई समय आया हो कि आपने ऐसा ब्रेक लिया हो कि हफ्ते भर तक पढ़ाई नहीं करी हो? You're just lazy. There have been months when I haven't studied. Trust me on this. I told you I was in depression at one point of time in my life. I threw my books. I told you, ये तो अब नहीं करूँगा मैं. मेरी जिंदगी खराब हो गई. And then I gathered energy and came back. So there have been months also when I haven't studied. So होता है ये. This happens with everybody, you know. That's very common. You cannot run away from that. So sir, last segment of the day. I'll just present one word and आप उसके ऊपर एक another word या एक sentence short में कुछ भी आपके मन में जो पहला instinct आता है उस word को सोच के you have to tell. Number 1, obvious, UPSC. For me, it is service, I would say. Favorite subject? Mathematics, which I haven't studied from last 10 years. Almost. Morning time or night time for studies? Morning time, yes. Distractions? Anything that comes to mind? Yes. Destruction should not be a destruction for you. Distraction should be a destruction. You shouldn't get destroyed by distractions. You should use this to your advantage. Support? Family. Lakshmikant? I hate that. I hate that. Now I've read it like 30 times. Now I can't see it. I want to get divorced from Lakshmikant. TVF Aspirants web series? I loved it. That is reality, trust me. Law and Order? It has to be maintained. There's no other way out. Old Rajinder Nagar? I don't want to go back to that place anymore. That is so much chaotic and there's so much of negativity which I feel. But you have to go there once. Role model? My father. Favorite movie? Favorite movie? Sholay. I still watch it. Dream of your life? So that one day when I will die, I want people to realize that he was something which we will surely miss. Your competition? Myself. It's me. It's totally me. That was obvious. Thank you so much, sir. We went into a very philosophical discussion by the end. बहुत अच्छा experience रहा, sir, and we'll love to have you again. Now I'll again like to invite our convener to put our great seminar to an end. Over to you, sir.
I think thank you is not a adequate word which I can put here for IPS Mohibullah Ansari sir, because जो भी हमारा 1.5 घंटे का सेशन चला है, that is really amazing, और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका हूँ इस सारी चीज़ें सुन के और बातें समझ के, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के जो स्टूडेंट्स अभी हमारे डिपार्टमेंट के और आउटसाइड डिपार्टमेंट जो हैं दे आर आल्सो ज्वाइन, तो जो हम लोगों ने सीखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी जो है सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होंगी तो, और क्योंकि जब मैंने सर से बात की उस दिन करीब 1.5-2 घंटे बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी इनके जैसा ही लगता है, सोचता हूँ जिस तरह से जो चीज़ें हैं, तो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू सर, और ऑन द बिहाफ ऑफ होल फैकल्टी एंड ऑन बिहाफ ऑफ all the participants and the students who have joined this meeting, thank you so much for this amazing session, or thanks a lot. I'd like to tell you one thing, like I'm really amazed by the energy which Raghav has. I really don't know anybody else, but I get inspired by this guy, like the energy which he has and the motivation to do things. I really love it. I told him in the beginning also, we'll keep meeting inshallah, hai na Raghav? Inshallah. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. That was a great event. We can leave the meeting now.